You can speak now. Madam, announce. He's on the line. Online. Welcome back to the technical session 2. I request all the participants to please settle down immediately. Okay. This will be an online session. Our speaker, the expert, will be joining us online. एक स्मारिका है क्या सर के बारे में वहां से पढ़ेंगे तो चला जाएगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम जल्द ही टेक्निकल सेशन 2 हमारे जो एक्सपर्ट है वो हमसे जुड़ गए हैं। वीडियो भी आपको चाहिए? आप कर दीजिए स्क्रीन पे वो पढ़ेंगी तो आवाज जाएगी ना सर तक जाएगी, लेकिन अभी आप बात करें तो आपका वीडियो। वेलकम सर। आवाज सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। अब सर की आवाज आ रही है? प्रणाम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में। सर व्यस्तता के कारण आ नहीं पाए, मीटिंग्स लग गई थी, अदरवाइज सर का आशीर्वाद हम लोग को जरूर मिलता। और अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ चांदनी रोशन जी को। सर का परिचय दें सबको। चांदनी। थैंक यू सर। सर, myself Chandni Roshan, I extend my heartiest welcome and gratitude to you for joining us today. Dr. Ashok Kumar Ghosh is currently working as chairman, Bihar State Pollution Board, and professor and head of the Department of Research at Mahavir Cancer Institute of Research Center, Patna. He superannuated as professor in charge of Department of Environment and Water Management in College Patna after 44 years of active service. He is currently working on a multinational Indo-Dutch Bangladesh research project, whose name is DILTAB, for arsenic mobilization in Gangetic floodplains of Bihar, supported by NWO Botro, the funding agency of Netherlands government. Thank you, sir. Thank you so much for joining us today. Namaskar. Thank you. Thank you for inviting me to give a talk on a very important discussion. मैं चाहता था कि मैं खुद आऊं, लेकिन कुछ कार्य के engagement के चलते नहीं आ पाया. I'm very sorry for that, but technology is at least there to overcome these problems. मैं मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ 1972 से. मैंने अपने करियर का शुरुआत किया था 1972 में और 2016 में मैं रिटायर किया. तो एक लंबा एसोसिएशन रहा मगध यूनिवर्सिटी से और मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट है कि मैं आप सबके सामने कुछ बोलने के लिए आया हूँ और एक ऐसा टॉपिक बोलना चाह रहा हूँ जो हमारे हृदय के काफ़ी करीब है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मेरा संबंध अभी भी रिसर्च से है, लगातार मैं रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ. हालांकि मेरा रिटायर किए हुए 7 साल हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मैं अभी महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ रिसर्च डिपार्टमेंट में और कुछ मल्टीनेशनल कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा हूँ. मुझे कहा गया था कि रिसर्च के बारे में कुछ बताया जाए, क्या मेथोडोलॉजी हो, क्या एथिक्स हो, वगैरह वगैरह. ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय का लिमिटेशन है. मैं 2-3 बात शुरू में कहना चाहूँगा आप लोगों से. एक तो लोग बोलते हैं अक्सर रिसर्च के बारे में जब चर्चा होती है, कुछ मिड एज प्रोफेशनल या मिड एज अबव मिड एज प्रोफेसर्स, तो वो बोलते हैं कि मेरा एज बहुत हो गया है, अब इस उम्र में रिसर्च क्या करें. जबकि उम्र हार्डली उनका 40-45 भी होता है, ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं रिसर्च क्या करूं, अब मेरा एज बहुत हो गया है. तो पहला ये तो गलत है धारणा. मेरे मुताबिक रिसर्च किसी भी उम्र किसी भी शुरू किया जा सकता है.
एज बैरियर नहीं है। मैं अपना उदाहरण अगर दूं तो मैंने जो सीरियस रिसर्च है वो शुरू किया था एट द एज ऑफ 51, 51 साल में, और 51 साल के बाद मैंने शोध में काम करना शुरू किया और अब तक करीब 20 प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ। तो दिमाग से ये तो निकाल दीजिए आप लोग कि एज कोई बैरियर है रिसर्च में। रिसर्च ही एक ऐसा एरिया है जिसमें कभी भी आप रिसर्च शुरू कर सकती हैं विदाउट थिंकिंग कि हम बूढ़े हो गए हैं। हमसे बूढ़े तो नहीं होंगे कोई आप जितने दर्शक बैठे हुए हैं। मेरा एज 72 साल हो गया है और अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ ये बताने के लिए कि एज कोई बैरियर नहीं होता है। दूसरा जो मिथ होता है वो अक्सर जो लोग बोलते हैं शोध के क्षेत्र में कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे यहाँ लैब नहीं है, लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या काम करें। ये अक्सर हम सुनते हैं अपने कलीग लोगों से, यंग कलीग लोगों से जो बाहर से आए हैं, नए नए प्राध्यापक आए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं। उनका अक्सर ये जब हमसे मिलते हैं तो अक्सर ये कंप्लेन रहता है कि क्या करें रिसर्च सर, कुछ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, अच्छा अपरेटस नहीं है, लैब नहीं है, काम करने का इन्वायरमेंट नहीं है। तो फिर मैं अपना ही उदाहरण दूंगा कि मेरा बैकग्राउंड था मोलेकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का, और जब मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूं तो हमारे इर्द गिर्द कोई लैब ऐसा नहीं था जिससे मोलेकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का रिसर्च किया जा सके अच्छी तरह से, और उसको इस्टेब्लिश करना भी मेरे वश में नहीं था, क्योंकि जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी में अगर आप शोध करना चाहते हैं तो जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने देखा कि तब क्या उपाय है। एक उपाय है कि हम कुछ नहीं करें, दूसरा उपाय करें कि जो सीमित संसाधन है उसके द्वारा कुछ शुरू करें, समवेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो मैं खोज रहा था, खोजते खोजते मुझे नजर आया कि एक एरिया ऐसा है जिसमें मेरा जो लिमिटेड रिसोर्स है लैब का उसको मैच करा के हम कुछ काम कर सकते हैं। और वो एरिया था, उस एरिया का चुनने का कारण था हमारे लैब में एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था। मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, जब मैंने रिसर्च शुरू किया था। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जेनेटिक्स का तो कोई शोध हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एरिया चेंज करूं, एरिया मॉडिफाई करूं, और मैंने अपना एरिया मॉडिफाई किया। मैंने सोचा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वाटर क्वालिटी का एनालिसिस तो किया जा सकता है। तो मैंने पटना के कुछ पॉन्ड्स का वाटर क्वालिटी को एक साधारण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी करना शुरू किया। कुछ पेपर भी लिखना शुरू किया मैंने, और एक दो पेपर लिखने के बाद लोगों का ध्यान गया, और एक कोइंसिडेंस था कि उसी वक्त में यूनिसेफ के लोगों ने हमको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सुना है कि आप कुछ पानी पर काम कर रहे हैं। हम क्या, हाँ पानी पर तो काम कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको ऑफर दिया कि क्या आप आर्सेनिक मिटिगेशन पर काम कर सकते हैं, आर्सेनिक डिटेक्शन पर काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए आर्सेनिक डिटेक्शन के लायक मेरा लैब नहीं है, अगर आप लैब सपोर्ट करेंगे तो मैं काम कर सकता हूँ, हमको मेथोडोलॉजी पता है और इस क्षेत्र में शुरू किए हैं हम। तो मेरे पहला प्रोजेक्ट मिला 5 लाख रुपए का यूनिसेफ के द्वारा, और साथ में उन्होंने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिया। उस समय लगता था कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग के लिए वरदान है। उससे काम करना शुरू किया, डिटेक्शन शुरू करना किया, और धीरे धीरे अन्य प्रोजेक्ट आने लगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट आने लगे, और डिफरेंट प्रोजेक्ट के आने से लैब भी इनरिच होते लग गया। और आज के दिन में मैंने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से शुरुआत किया था अपने रिसर्च का यात्रा। और अगर पटना में आएंगे आप तो हमारे लैब में जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है उसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है, रियल टाइम पीसीआर भी है, टीओसी भी है, एचपीएलसी है, और सभी फंक्शनल है। और ये जितना नाम ले रहा हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट का, वो सारा हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू आया है। जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते गया उससे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जुड़ते गया, और आज के दिन में मैं कह सकता हूँ या कर रहा हूँ कि मैं अब जीन के लेवल पर रिसर्च शुरू कर चुका हूँ। क्योंकि मैंने आर्सेनिक पॉइजनिंग से काम शुरू किया था। आर्सेनिक पॉइजनिंग से म्यूटेशन होता है जीन में, और जीन के म्यूटेशन से कैंसर होता है। और हमारे पास अभी रियल टाइम पीसीआर है, लेकिन सिक्वेंसर नहीं है। तो सिक्वेंसर हमारे पास नहीं रहने के चलते कुछ काम रुकता है। उसके लिए एक अगला प्रिंसिपल मैं बताऊंगा, वो ये है रिसर्च के क्षेत्र में कि आज किसी भी लैब में जाइए, कहीं भी जाइए, तो कुछ न कुछ कमी आपको दिखाई पड़ेगा। और इसका सलूशन एक ही है जो हरदम बोलते हैं आप रिसर्च के क्षेत्र में, हर कोई एडवाइज करते हैं। आज के समय में
एक ही मंत्र है, इधर कोलैबोरेट और पेरिस, देयर इज नो थर्ड चॉइस। या तो आप कोलैबोरेट कीजिए अन्य संस्थान से, या पेरिस कर जाइए, ये कुछ नहीं कीजिए, डेड हो जाइए। और ओपन है, मैं विदेश में देश में जितने बड़े बड़े लैब है सब में घुमा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हूँ, और भी जगहों पर काम किया हूँ। हर लैब में कुछ है तो कुछ नहीं भी है। तो जैसे अगर हमने कहा कि अभी सिक्वेंसर हमारे पास नहीं है और हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें सिक्वेंसर आवश्यक था, तो मैंने तलाश करना शुरू किया कि आखिर सिक्वेंसर कहाँ है। पता चला कि बिहार में अभी कहीं नहीं है, एक जगह पर लगने वाला है, और वो जगह है कैंसर हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। मैंने उनके डायरेक्टर से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया MOU साइन करने के लिए, और ये भी कहा कि आप हमारे सिक्वेंसर पर काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी आप उम्मीद नहीं कीजिए कि अगर आप शोध करना चाहते हैं तो आपको शोध के लिए सारा संसाधन एक साथ मिलेगा। कुछ मिलेगा, कुछ आप क्रिएट कीजिएगा, कुछ कोलैबोरेट कीजिएगा, और एक दूसरे का कोलैबोरेशन के थ्रू अपने क्षमता को और अच्छा कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगा, आप जगह बना पाएंगे। तो दो तीन चीज़ देखना है कि रिसर्च गैप क्या है, उसको गैप को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको करने के लिए आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसमें क्या नहीं है, और कैसे कोलैबोरेट करके दूसरे संस्थान से कोलैबोरेट करके उस कमी को हम पूरा करें। मैं आप लोग को ओपन निमंत्रण देता हूं कि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट बताया, जो भी मेरे पास है, लैब माइक्रोबायोलॉजी का भी लैब है हमारे पास विकसित, जिसमें सारा इंस्ट्रूमेंट फंक्शनल है। अगर आप में से कोई भी शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और आपके यहाँ इन इंस्ट्रूमेंट की कमी है, यू आर वेलकम टू मी। हम बराबर हम चाहते हैं कि और भी नए रिसर्चर पैदा हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ मेरे ख़त्म होते ही समाप्त हो जाए। नए जनरेशन को टेक ओवर करना चाहिए। तो आज ऑडियंस में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको मेरा ओपन निमंत्रण है कि जब कभी भी आपको लगे कि किसी खास इंस्ट्रूमेंट के कमी के चलते आप अपना शोध पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इजीली एक्सेसिबल हैं और मदद भी कर सकते हैं। एक और है चीज जो अक्सर रोड ब्लॉक के रूप में आता है रिसर्च वालों के लिए। वो बोलते हैं कि रिसर्च करेंगे तो प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। इस पर भी मैं फिर अपना ही अनुभव बताऊंगा, और वो बहुत पुराना नहीं बताऊंगा रिजेक्ट होने का। पिछले साल मैंने 5 रिसर्च प्रोजेक्ट अप्लाई किया था टोटल, 2 इंटरनेशनल और 3 नेशनल। उसमें से 3 रिजेक्ट हो गया, असफल हो गया, हमको नहीं मिला। तो जब 3 असफल हो गया तो हमको लगा, ऐसा नहीं लगा कि हम बेकार हैं, असफल होना एक प्रोसेस है। लेकिन दो सफल हो गया, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और एक नेशनल प्रोजेक्ट ICMR से, और एक इंडो जापान टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ। तो मेरा जो 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ उसको सारा दुनिया जाना, और जिसमें हम फेल कर गए वो हम जाने। तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन में भी हम जितना प्रोजेक्ट डालते हैं वो एक्सेप्ट हो ही जाता है। तो अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो फेलियर को एक्सेप्ट करने का कोशिश कीजिए। फेलियर होगा, हमारा रिसर्च का इतना अनुभव हो गया, और मैंने अपना बताया आपके सामने। लोग अपने असफलता को नहीं बताते हैं, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं आपने डाला और रिफ्यूज हो गया, नहीं मिला, तो हतोत्साहित नहीं होइए, उसको फिर से रिवाइज करके दूसरे एजेंसी को डालिए, तीसरों को डालिए, दरवाजा खुलेगा, कभी ना कभी आपको मिलेगा। और किसी भी साइंटिस्ट को 100% सक्सेस नहीं होता है। अगर हम आज कहें कि हमारे पास नेचर में मेरा पब्लिकेशन है, अच्छे एल्जेवियर के पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं हमारे, इसलिए हम जो प्रोजेक्ट डालेंगे वो हमको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीका है, और 1-2 फेलियर के लिए हरदम आदमी को तैयार रहना चाहिए। फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक और है पेपर रिजेक्ट होने के बारे में। पेपर रिजेक्ट होता है तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई आप हमको पेपर लिखने नहीं आता है, पेपर का क्वालिटी खराब है। पेपर लिखना एक कला है, और ये कला धीरे धीरे आपके में अंदर में आता है, लिखने से सीखता है आदमी। और अच्छे जर्नल में जब भी आप पेपर डालते हैं अपना, तो पीयर रिव्यूड कमेटी होता है जिसमें अच्छे साइंटिस्ट लोग रिव्यू करते हैं, उसके आधार पर जजमेंट करते हैं, और या तो आपका एक्सेप्ट करते हैं या रिवीजन के लिए देते हैं, या रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा आपसे।
मैंने जब पहला रिसर्च पेपर लिखा जिंदगी का और एक नेशनल जर्नल में ही छपने के लिए मैंने उसे भेजा, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट हो गया। एडिटर ने इतना गंदा चिट्ठी हमको लिखा कि वो मैं आज तक अपने बक्से में सुरक्षित रखा हूँ। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि डॉक्टर घोष, लगता है कि आपको रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। अगर आपके विभाग में कोई सीनियर आदमी है तो उससे संपर्क करें, उनसे सलाह लेकर के पेपर लिखे, तब बाद में हम लोग विचार करेंगे। मुझे सदमा लगा, किसी को सदमा लगता है इतना बुरा कमेंट सुनने के बाद, जब उन्होंने कहा कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप यूं ही पेपर लिख दिए। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि इसी पेपर को इसी रिवाइज करके इसी जर्नल में छपवाऊंगा। मैंने 3 बार रिवीजन किया उसका और बार बार उसी एडिटर को भेजता था, और रिवीजन मैंने खुद किया। और चौथे बार जो मैंने सबमिट किया, वो पेपर उसी एडिटर ने जिसने हमको वो गंदा चिट्ठी लिखा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया और पब्लिश हुआ। उस चिट्ठी को हम आज भी रखते हैं अपने पास, और जब भी मेरा कोई पेपर रिजेक्ट होता है तो उसको एक बार देख लेते हैं, तो उत्साह बढ़ जाता है कि हम कहाँ थे। अभी मान लीजिए कोई पेपर रिजेक्ट ही हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर कोई रिव्यूअर बोलता है कि आपका पेपर इस जर्नल में छपने लायक नहीं है, ओके, इट इज हिज व्यू, यू हैव टू रिवाइज इट एंड रीसबमिट इट। और रिव्यूअर जो कमेंट लिखता है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, सबमिट होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ये भी हरदम दिमाग में रखिए कि पेपर का एक्सेप्टेंस का भी जो स्कोर होता है 100% नहीं होता है। जैसे अभी नेचर में मैंने एक पेपर पब्लिश किया है हाल में, गॉल ब्लैडर कैंसर पर। उसको 5 बार रिवीजन के लिए मेरे पास भेजा गया, 5 टाइम्स। 5 में रिव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछा हमसे बहुत तरह का, उसका हम लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया और फाइनली वो पेपर पब्लिश हुआ। नेचर में हम लोग का 3 पेपर पब्लिश हो चुका है और कोई भी पेपर एक अटेम्प्ट में पब्लिश नहीं हुआ है। कम से कम 3-4 बार रिवीजन हुआ है, उसके बाद पब्लिश हुआ। और पेपर लिखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लैंग्वेज किस तरह का है। लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिफिक फैक्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है। अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब भी आप रिसर्च करें, कोई शोध करने का सोचें, तो 2-3 चीज बात का ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको रिसर्च गैप ढूंढना होगा। जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप, हमको पता नहीं है आप लोग का बैकग्राउंड, आप लोग कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ बायोलॉजी के होंगे, और जहाँ भी होंगे वहाँ छोटा ना बड़ा कुछ ना कुछ तो लैब होगा ही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैब नहीं होगा, हो सकता है वो छोटा लैब हो या फंक्शनल नहीं हो। तो पहले आप रिव्यू कर लीजिए कि आपके लैब में क्या संसाधन है। हो सकता है बहुत कम संसाधन हो। उसके बाद आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या समस्या है, उस समस्या पर ध्यान दीजिए और उस समस्याओं में से किसी एक को चुनिए जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मोदी जी का गवर्नमेंट है, ये जब से सरकार में आई तो उन्होंने मीटिंग भी किया था एक साइंटिस्ट लोगों का, जिसमें मैं भी गया था। और उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछा था जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। पहला उन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कितने साइंटिस्ट ऐसे हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सभी ने हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कितने लोग हैं जिनका पेटेंट है, तो सबने हाथ उठा दिया। ऑलमोस्ट अच्छे से साइंटिस्ट आए थे जिनका पेटेंट था। तीसरा क्वेश्चन था कि उन पेटेंट में से कितना पेटेंट मार्केट में गया, तो अधिकतर लोग सर झुका लिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका थ्रस्ट है कि आप रिसर्च कीजिए, केवल अपने सीवी को मोटा करने के लिए ये नहीं चलेगा। आप अपने सीवी को भी मोटा कीजिए, लेकिन आपके शोध को सोसाइटी में भी जाना चाहिए। सोसाइटल कॉम्पोनेंट जरूरी है। तो जो भी फंडिंग एजेंसी है आजकल, डीएसटी है या और भी है, जिसके रिव्यू कमेटी में भी मैं जाता हूँ, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन हम लोग को रहता है कि आप लोग को इम्फेसाइज करना है कि रिसर्च ऐसा हो जिसका साइंटिफिक कॉम्पोनेंट भी हो और सोसाइटल कॉम्पोनेंट भी हो, कि आपके शोध से समाज में निकल कर कूद जाए। अगर आपका सीवी बहुत मोटा है कि हम 15 पेटेंट कराए हुए हैं और 100 रिसर्च कराए हुए हैं और आपके सारे शोध से समाज को कोई फायदा नहीं है, तो आप सरकार का रुपया बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई रिसर्च टॉपिक या पेपर या कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, तो एक बार देख लें कि आपके प्रोजेक्ट से समाज को क्या फायदा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अभी कहा है ये बात, मैं शुरू से बिलीव करता हूँ इस बात में कि आपका जो प्रोजेक्ट होना चाहिए या
पब्लिकेशन होना चाहिए, उससे समाज को कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। केवल आपको फायदा नहीं होना चाहिए कि आप लीडर हो गए, आप प्रोफेसर हो गए, इसलिए आपने पेपर छापा और आपके रिसर्च से समाज को कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप बेकार हैं, बेकाम हैं। क्योंकि अंत में तो जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं, समाज का एक हिस्सा है हम लोग। प्रोफेसर बनना, लीडर बनना एक अलग बात है और समाज को कुछ देना अलग बात है। ये दो आयाम हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने प्रमोशन के लिए काम नहीं करें, आप अपने प्रमोशन के लिए भी काम करें, लेकिन साथ में समाज को भी ध्यान में रखें कि समाज को क्या फायदा है। और हमने जितना भी रिसर्च किया है, जैसे आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन पर मैंने काम किया है, उसका मिटिगेशन पर काम किया है जिसके थ्रू आर्सेनिक फ्री वाटर दिया जा सकता है। कैंसर पर काम किया है, गॉल ब्लैडर कैंसर काउजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई किया है जो अर्ली स्क्रीनिंग में काम दे सकता है। ये कुछ उदाहरण है जिस पर मैंने काम किया है, शोध किया है, और हमारे शोध का फायदा डायरेक्ट सोसाइटी तक जा रहा है। ये भी आपके लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट लिखें, तो जरूर उसमें आप ये ध्यान रखें कि सोसाइटल कंटेंट हो। एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, आप लोग से समय है? आई डोंट नो, आई हैव क्रॉस्ड टाइम और नॉट। मैं ऑर्गेनाइजर से समय है? Yes. Yes, sir. 5 मिनट और बोल सकता हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा एक अपना, जस्ट ए मिनट। ओ, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करेंगे हमको, जो होस्ट है? Yes, sir. Give me a minute. ओके, You can share your screen, sir. दिख रहा है मेरा स्लाइड? मेरा स्लाइड दिख रहा है? हेलो हेलो, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? Am I audible? मेरा आवाज नहीं जा रहा है? Give me a moment, sir. Just give me a moment. Please share the screen now, sir. Yeah, we can see your screen. It's visible. Can you listen me? Yes, sir. Okay, I'll put it in slide show. बहुत सारी बातें तो मैं कह चुका हूँ, जो मेरे मन में था, जो विचार में था, और जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन काल में, वो साझा किया आपके साथ। 2-3 पॉइंट है जो मैं स्लाइड के थ्रू आपको कन्वे करना चाहूँगा। जैसे रिसर्च क्या है, ये प्रश्न आता है दिमाग में। व्हाट इज रिसर्च? दैट इज बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड. It is a careful investigation for new facts in any branch of knowledge. That is the first point. And Redmond and Morey, they defined it. The research is a synthetic, systematic effort to gain new knowledge. शोध उसी को कहते हैं जिससे कि कोई नया नॉलेज आप गेन कर पाए, ये परिभाषा है। और क्लिफोर्ड वुडी ने कुछ कमेंट किया है कि रिसर्च के बारे में, that research is defining and redefining problems, formulating hypotheses and objectives. That is one thing. Also collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusions, testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or objective or not. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको शुरू करने के लिए दिमाग में कोई हाइपोथेसिस होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिस पर आप काम करें। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस जुटाना होगा। और तभी जब एविडेंस आपने जमा कर लिया और आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया, तो कंक्लूजन्स पर लिखना होगा कि दिस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल. दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर सिस्टमेटिक रिसर्च. देन व्हाई डू रिसर्च? ये भी मैंने पूछा भी था कि क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। इसका आंसर ये नहीं बोलिएगा कि चूंकि हमको प्रमोशन लेना है। प्रमोशन लेना भी एक काम है,
लेकिन वो बहुत सेकेंडरी है। प्रमोशन तो हो ही जाएगा, सभी का हो ही जाता है। और पेपर लिखना केवल प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए। एक तो डिजायर है सबसे महत्वपूर्ण, डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री along with consequences benefit, जिस बेनिफिट में आपका प्रमोशन भी आ जाता है। डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, ये आपको उत्साहित करता है। ये जो डिजायर होता है कि किसी चीज को जानने का, जैसे बहुत लोग हमारे दोस्त पूछते हैं कि 72 साल के हो गए हो, अभी तक तुम रिसर्च में सुबह से शाम तक जुटे रहते हो। अरे छोड़ो काम, अब बुढ़ापे में अपना आराम करो, रेस्ट करो, अभी तक क्यों रिसर्च करते हो? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमको रिसर्च करने से नया जीवन मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, और कुछ चैलेंज को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उससे जो किक मिलता है वो वाइन पीने के किक से बहुत बड़ा होता है। और वही किक है जो हमको अभी तक एक्टिव रखा हुआ है और मैं बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, हमको शुगर नहीं है, हम बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं संडे को। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है कि मेरा मकसद है, एक डिजायर है। ऑल्सो डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। आप कुछ भी क्रिएटिव काम करेंगे तो आपको खुशी होगी, आपका डिजायर जागृत होगा। एक और पॉइंट जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डिजायर टू बी सर्विस टू सोसाइटी। केवल अपने के लिए मत सोचिए, आप ये भी देखिए कि सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। डिजायर टू गेट रेस्पेक्टेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने हमको बुलाया तो आपने हमको सम्मान दिया। ये सम्मान इसलिए नहीं दिया कि मैं चेयरमैन, आपने इसलिए बुलाया कि मैंने शोध में कुछ काम। तो शायद अगर मैं केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन होता तो आप हमको नहीं बुलाते। लेकिन हम चूंकि साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, इसलिए आपने हमको इस लायक समझा कि मैं आपको एड्रेस करूं। And directive of government employment conditions, etc. That is also important. These are the research, why we should do research and why we do research. And then validation, intuition, improved methods, demand of the job, publication, ये तो है ही, that is accessory. Then subject choose करने का, एक तो है आपका आइडिया इंपॉर्टेंट है, एक आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, और जो आप पढ़ते हैं किताब बुक्स पढ़ते हैं तो उससे भी आइडिया मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण ओरिजिनलिटी, आपके वर्क में नोवेलिटी होना चाहिए। जब तक आपके वर्क में नोवेलिटी नहीं होगा तब तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आपका कोई पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। देयर हैज टू बी समथिंग न्यू। अगर नोवेलिटी नहीं है, रिपीटेटिव है, यू विल बी फेल्योर। सो हैव न्यू आइडियाज, न्यू हाइपोथेसिस, टेस्ट देम, प्रूव देम और डिस्प्रूव देम एंड देन पब्लिश। दैट इज समथिंग। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन होता है तो उसमें एक प्लान होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। Specify the source and types of information relevant to the research problem. That is one thing. Then strategy. फिर प्लान करने के बाद आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। Which approach will be used for gathering and analyzing the data, ये डिसाइड करना होगा। And the time and budget, वो भी important है। Most studies are done under these two constants. बजट का भी कॉन्स्टेंट रहता है, समय का भी, कि आपको 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है और 30 लाख रुपया दिया गया है। ये सब कांस्टेंट रहता है, उसी में आपको, उसी फ्रेमवर्क में आपको काम करना होता है। आपको कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगा, परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कांस्टेंट के साथ चलना होगा और काम करना होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, ऑल स्टेप मस्ट बी इंटररिलेटेड वन टू अनदर, द होल प्रोजेक्ट। लॉजिकल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक। एम्पिरिकल, conclusions should be based on evidence and observation. आपका मर्जी पर नहीं होगा कि हमारा मर्जी था इसलिए कुछ लिख दिया। आप जो भी कंक्लूजन लिखेंगे उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा, ऑब्जर्वेशन देना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, डाटा से सपोर्ट करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। द ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट मस्ट आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च यू हैव टू पुट सम क्वेश्चंस एंड देन ओनली यू हैव टू प्लान इट। रेप्लिकेबल, आपका रिसर्च ऐसा हो जो दूसरे साइंटिस्ट रेप्लिकेट कर सके। अगर आप कोई काम किए, रिप्लिकेट हो ही नहीं रहा है, तो आपके काम में फ्लॉ है, कहीं ना कहीं कमी है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिटेबल, स्प्रेड होना चाहिए, इसका पब्लिकेशन होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक स्टडी। देयर आर मेनी मेथड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जिसको बताने के लिए फिर कभी हमको समय दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। ऑल्सो वेल डिजाइन एंड कंडक्टिव रिसर्च हैज पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने कहा कि सोसाइटल रिच होना चाहिए। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में
रखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। इसको क्लोज कर सकते हैं आप स्लाइड को, और नॉर्मल पर जा सकते हैं। ये कुछ मेरा एडवाइस था जो मैंने साझा किया आपसे, और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिले, कोई कारण नहीं है कि आपको पब्लिकेशन नहीं हो। और आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो इस बात से डरते हैं कि अब तक हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ये भी कहीं से ना कहीं से रहता है दिमाग में कि हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आगे भी हमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। देयर इज, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट समवेयर, बट माय एडवाइस विल बी देयर, डोंट स्टार्ट विथ ए बिग, स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वेरी वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो बाय पब्लिकेशन, छोटा छोटा पब्लिकेशन से पोर्टफोलियो बना लीजिए उस क्षेत्र में। और अगर आपका बैकग्राउंड में 3-4 पेपर भी अच्छा हो जाता है और आपको एक आध पेपर भी, एक प्रोजेक्ट भी मिल जाता है 4 लाख 5 लाख तक का भी, तो वो भी काफ़ी होता है आगे बढ़ने के लिए, और करोड़ों का आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया था, जैसे बताया यूनिसेफ का था, वो 5 लाख का था। और अभी जो अंतिम प्रोजेक्ट पर जिस पर काम कर रहा हूँ मैं, इंडो जापानीज प्रोजेक्ट है, उसका जो बजट है वो करीब 3 करोड़ का है। तो मैं 5 लाख से 3 करोड़ पर पहुंचा हूँ, एक दिन में नहीं पहुंचा हूँ, समय लगा है। लेकिन शुरुआत में मैं भी 5 लाख पर ही था। 5 लाख भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी। आज अगर हम करोड़ों में प्रोजेक्ट ला सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कूद के ऊपर पहुंच गए। मैंने सीढ़ी चढ़ा है, मैंने स्टेप वाइज आगे बढ़ने का कोशिश किया है, और आप भी कर सकते हैं। हम एक छोटे कॉलेज में पढ़ाना शुरू किए थे, एन कॉलेज में पटना में, जिसमें बहुत सारा फैसिलिटी नहीं था, कॉन्स्टेंट्स भी था, लेकिन उसके बावजूद हमने काम शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे। और कम से कम अभी आपके वाइस चांसलर साहब को हम पर्सनली जानते हैं, जो नए वाइस चांसलर साहब हैं एसपी साई जी, पता नहीं हॉल में हैं या नहीं, हम नहीं जानते हैं। ये कम से कम ऐसे आदमी हैं, वो हमारे तो काफ़ी जूनियर हैं, वो गुरुदेव कहा करते हैं। ये रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिसर्च को सपोर्ट करने वाला वाइस चांसलर भी कम ही मिलता है, बहुत कम मिलता है। और फिर मैं एक अनुभव साझा करना चाहूँगा कि जब यूनिसेफ का प्रोजेक्ट तो मिल गया हमको डायरेक्ट, उसका दूसरा प्रोजेक्ट हमको मिला था डीबीटी से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। करीब 7 लाख का था प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट चला गया मगध यूनिवर्सिटी में। पहले डायरेक्ट नहीं आता था। मगध यूनिवर्सिटी में हम दौड़ते रहे, उस समय हमको कोई जानता भी नहीं था, बहुत बड़े रिसर्चर भी हम नहीं थे, एक रजिस्ट्रार थे उस समय। तो जब 4-5 बार हम दौड़ चुके, 6ठी बार गए उनके पास, उनको कहा कि सर 3 महीना हो गया है, मेरा पैसा के रखा हुआ है, डीबीटी का पैसा है, आपका यूनिवर्सिटी का पैसा भी नहीं है, तो आप उसको रिलीज क्यों नहीं कर देते हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ये मगध यूनिवर्सिटी है सर, इसमें बाप का पेंशन बेटा लेने आता है, तो आप 3 महीने भी उगता गए, ये हमको कहा गया था। ये सुनने के बाद या तो हम हतोत्साहित हो जाते और रिसर्च को छोड़ देते। और भी कहा गया, एक और मैं आपको, जो सामाजिक संरचना है उसमें हमको मैसेज दिया गया एक आदमी के थ्रू, घोष बाबू को बोलो कि 5 लाख का 7 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 2.5 लाख बांट लें, और 1-2 लाख में कुछ करना है करके जमा कर दें। तो ये इस माहौल में हमने काम शुरू किया था, और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ये माहौल था, ये सब भी आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे अभी जो प्रेजेंट वाइस चांसलर है उससे डायरेक्ट मिलेंगे, अपने समस्याओं को बोलेंगे, तो जरूर आपको मदद करेंगे। और नहीं मदद करेंगे तो हमको बोलिएगा, मैं साहेब जी को डांट कर बोलूंगा कि आप मदद कीजिए, उनको क्यों नहीं करते हैं, वो अधिकार है उन पर हमारा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके, और मैं यहाँ रुकूंगा अब, और आगे जितने प्रतिभागी हैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि पटना कभी आइए तो मेरे लैब में भी आइए, हमसे मिलना आसान है, और ईमेल भी हमको भेज सकते हैं कोई हेल्प का जरूरत हो तो। मेरा ईमेल भी बहुत आसान है, आपको लिखाएंगे नहीं, याद करा देते हैं, याद कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। मेरा ईमेल है घोष, जानते ही हैं मेरा फैमिली नेम है घोष, GHOSH स्पेलिंग है। 51 में पैदा हुए थे, 51, तो घोष 51 हो गया। और थोड़ा गर्म मिजाज है हम, hotmail.com। तो आप याद रखिए कि घोष मेरा फैमिली नेम है, 51 में पैदा हुए थे, थोड़ा गर्म है मिजाज से, तबीयत थोड़ा गर्म रहता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। तो ये ईमेल है हमारा, इस पर आप कभी भी कोई अगर आप
हेल्प चाहेंगे या कोई इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो मैं आपके लिए हरदम उपलब्ध रहूँगा. Thank you for listening me for such a long time period. Thanks. We'll meet someday again with you. Thank you so much, sir. It was such an inspiring and influencing lecture, sir. So, we have all been very much enlightened about the research, how to do research, and what are the challenges we will face during this process. Now we'll take 5 more minutes of yours, sir. We'll have an interaction with the students. Sure. Students, if you have any queries, any questions, you can ask to sir. Most welcome. Any queries? Any questions? Any question from students or participants? Okay, I think it was very much comprehensible, sir. So people have understood everything what is said. Thank you so much, sir. Now I invite Pramod Kumar Chaudhary, sir, for the vote of thanks. Thank you, Chandni ji. मैं प्रमोद कुमार चौधरी, Associate Professor and former Head Department of Sociology and Treasurer of in this workshop. सर नमस्ते, प्रणाम. जैसा कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार घोष सर का जैसा कि उनका जो उनके बारे में जो मालूम है मुझे कि ये चेयरमैन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड बिहार सरकार और हेड डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च महावीर कैंसर हॉस्पिटल पटना में ये कार्यरत है. जैसा कि रिसर्च के संदर्भ में आपने सर जिस तरह का हमें मार्गदर्शन दिया वास्तव में वह काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये मोटिवेशन लेक्चर आपने दिया है खास करके हमारे रिसर्च स्कॉलर के लिए, कुछ रिपोर्ट राइटिंग जो करते हैं, जो लिखना चाहते हैं उनके लिए वास्तव में ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन हम लोग के लिए है. आपने आपके द्वारा बहुत अच्छे तरह से बताया कि जिस तरह से एक अगर कोई रिसर्च स्कॉलर अगर वो प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी यह चीज भी ऐसी समय भी आता है जब कभी कभी लगता है कि मैंने खूब मेहनत किया लेकिन उसके परिणाम स्वरूप मुझे वह अवसर नहीं मिल पाया. जैसा कि सर ने भी अपने लेक्चर में खास करके उन्होंने बताया कि बहुत परिश्रम करने के बाद जो है कई बार उनका वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, रिजेक्ट भी हो गया. तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह वास्तव में हम लोग के लिए खास करके बहुत ही आवश्यक है सर. और साथ ही साथ आपने साइंटिफिक मेथड को और लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी बात खास करके हम लोग के लिए, खास करके रिसर्च राइटिंग के लिए जो है यह हम लोग के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है. साथ ही साथ एक चीज और हम लोग के सामने जो बहुत बड़ी बात आई कि वास्तव में सोसाइटल इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी रिसर्च होता है जब तक उसका सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं होगा तब तक उस रिसर्च का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. इसलिए यह बहुत बड़ी बात सर आपने कहा है. हम आशा करते हैं कि इन सभी चीजों पर हमारे रिसर्च स्कॉलर विशेष रूप से ध्यान देंगे और आने वाले समय में सर आपका जो मार्गदर्शन है, जो आपका जो विचार है, हम उसका ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे. आपने सर बहुत बहुत कीमती वक्त आपने दिया, तो सर आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं आपको सर बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Chaudhary sir. We will now start with the third technical session for the day, and our eminent guest speaker for this session is Professor Avlendra Thakur. Sir, kindly check if he is online with us. Professor Thakur, if you could hear me, we are ready to begin the third technical session now. Yeah, I am able to hear you. Am I audible at your end? Yes, sir.
On behalf of the organizing committee, I welcome you to the third technical session of the first day of this 5-day workshop on research, ethics, and project writing. A brief introduction to our eminent speaker. Professor Thakur is currently working as an associate professor in the Department of Physics at Indian Institute of Technology, Patna. His research area is experimental condensed matter physics with focus on wide variety of materials, including ceramics and polymer composites for device applications. His current interest lies in the development of new generation and novel functional materials for clean and green energy alternatives. Sir will be delivering his lecture for a period of 20 minutes, after which we will have a short interactive session with him. Over to you now, sir. Please allow screen sharing. Yes. Yes. Sir, if you can begin, we are allowing it from our end. You can start sharing your screen now, sir. Okay. Is it visible? Yes, sir. So the screen is visible, you can start now. Professor Thakur, you can start the lecture. We can see your screen. The screen is visible to us. Yes. Thank you, sir. So, first of all, I would like to thank organizer Professor Shahi, Vice Chancellor of Magadh University, and all the organizers. So, on this important workshop on research ethics and project writing. So, I begin with one quote: teaching and research supplement each other and hence are complementary as well. Teaching we consider as essential for human capacity building, whereas research is most essential for कैमरा जो है खाली सीट ना दिखाए solution of challenging issues. The most important item in research is the research funding, because without fund, research cannot occur. And the important funding agency in the country are Department of Science and Technology, Government of India, DRDO, Department of Atomic Energy, DAE, CSIR, UGC, ISRO, Ministry of Education, Indian Council of Cultural Research, Indian Council of Historical Research, NBHM, as well as industry. Research funding types may be research infrastructure grants such as SATHI, SAF, FIST. FIST is given at the department level for any department that is 5 years old in an institution and with minimum 5 faculty on permanent basis. SATHI is the Sophisticated Advanced Technical Help Institute, where a group of institutions are given large quantum of funding for research infrastructure building, whereas SAF, Sophisticated Advanced Instrumentation Facility,
is given to any university in the country that is engaged in research. Apart from research infrastructure grant, there are mission project grant, which is given only on issues of topical interest. For example, currently DST is funding for water pollution, on water and pollution, energy, renewable energy, etc. That is topical interest and challenging problem. Another funding is grant CNED project funding, where both institution as well as individual or group of individuals can get it. Another grant type is core research grant CRG, which is given a small grant of worth 20, 25 lakh or 30 lakh to individual faculty members. Early research grant to young faculty who join in any institution on permanent basis, that is up to 20 lakh. And to promote research of among women scientists, research grant are there, for which where women can be holding a permanent position or maybe on a temporary contractual position as well. However, all projects that are submitted, as Professor Ghosh was pointing out, may or may not get grant, because research grant is highly competitive and it is decided based on merit by a competent team. And the important items that must be under focus while writing research projects are: at least the target objective must be clear, and the project should either comprise a conceptually sound theoretical aspect, or experimental aspect, or design, or product development, or process development. Second, if we go for experimental, then experimental research may be focused on materials or process after identifying the gap, technical gap. And based on these two, motivation of research has to be clearly drafted, identifying the spark gaps comprising synthesis, experimental or computational planning. Nowadays, artificial intelligence has also entered into research based on AI data processing or robotic automation, characterization, and one should identify a technical aspect of the project based on the previous background evidence through publication. Once these essential items 1, 2, 3 are there, then one can think of identifying collaboration institution if funding requirement is large. Otherwise, one can proceed through CRG or early career grant or women scientist grant type project opportunities. And the goal and deliverable of the project must be very clear, with a bridge on either in between through proper methodology and process execution plan. Now, with these basic fundamentals for a good project that must be considered while project drafting starts, I am just going to have a case study analysis where a live project was submitted to DST and project was shortlisted after a screening, and fund was invited for presentation at Delhi, and the project has got success as well. This is a large funding project
under the scheme Sathi. When I say Sathi means scientific, sophisticated, analytical and technical help institute facility by DST Government of India, which is not given to a single institution but to a group of institutions. When IIT Patna started with such a project, then we identified 4 other partner institutions based on their progress made so far, and out of the 4, 2 are central institutions, central universities in Bihar, and one is the oldest university in Bihar, Patna University, and another is the Aryabhatta Knowledge University. Now, let us have a quick look what parameters are expected by the funding agency before a project is shortlisted and asked for presentation. First, they expect targeted thematic area where the project is written not only for paper publication but also to solve societal problem of challenging importance, to support MSME in the region in technology and startups in the technology development. So when we proposed this Sathi, then we identified seismological risk of this region that falls in region 4 and region 5 from earthquake point of view. Then MSME was kept in the forefront, their requirement, and startups were kept in the forefront. Then they expect what is the productivity of the institution that is proposing grant. Then out of the 5 institutions, the number of patents filed or applied in last 5 year data was needed by them, and the patent granted in the last 10 year was required mandatorily by the funding agency. These are the parameters that indicate whether the institution demanding fund deserves fund or not. This is a very critical parameter that is essential, and therefore IIT Patna wanted to lead this region in research, making joint consortium with other institutions. And I'm sure on receipt of grant, which we are going to get in another 1 month's time or 2 months' time, only these 5 institutions may not the beneficiary, maybe Magadh University as well, or Patliputra University as well, because this facility will be given for this region, not to IIT Patna alone. Then another details that they demand is publication status. So all 5 institutions had to give their publication data of 5 years. And if you look at the statistics, then the oldest university in the region, the Patna University, and one of the newest, the Aryabhatta Knowledge University, is lying little away, but the research culture has started there and it is going to pick up once this consortium grant is received. And I'm sure IIT Patna would always be available also for any university of the region, and IIT Patna welcomes any research facility to be extended to any institution in the world. Then next requirement was what kind of infrastructure is existing as on date, and where is the gap that needs to be funded. This is another important aspect that needs to be placed very clearly in the project writing, because large funding cannot be given until or unless basic infrastructure is available in an institution. So while drafting this proposal, we had to supply data that what is the existing facility at the institute,
why do we require a new facility, and what is the target objective, and whether the facilities demanded are matching with the target objective or not. So we gave them a statistical distribution of whatever facility has been there is currently, in which year they have been procured, what is the source of funding, and what is the present status. So for example, if an institution has got some project at some point of time and the facility required is non-functional, then new grant will be very difficult to receive. And it is at this point where administration of the academic institution has to be very proactive in supporting the principal investigators of the project so that project is implemented smoothly. Since such projects are time bound, the project should be implemented in time bound limit without any technical obstacle in the procurement of the equipment, in the procurement of the consumables, and in implementation of the project. Next item comes, all funding agencies require that minimum infrastructure the institution should be always ready to supply. For example, a space for creating lab. As for example, the Sathi facility, they asked us that 20,000 square feet of lab has to be kept ready before project is considered. Then the next item, they asked for whether availability of guest house is there for national users or not. Then whether the different programs like skill development, capacity building, etc. activities is going on in the institution or not. So these are the essential prerequisites that each funding agency nowadays is expecting from the institutions before fund is sanctioned to any institution. And it is at this point of time, all institutions should join in this region, should join hands so that these points, we don't lose marks on any of these points if we are in a consortium state. Otherwise, if any of these checklist is blank, then the project funding will be difficult. Next comes whether the facilities user is only the investigator or the facility user may be all open to all users, including academic institutions or MSME or startups or not. So at this point of time, I must point it out that university or college administration must have open mind in allowing the facility to be used by any end user, because the facility is given by the government not for an individual but for the mass user. Then they expect how are we going to implement the project, so that plan they also expect. And then comes the discussion. If all the previous discussion, whatever previous items I have pointed out, if all those parameters are fulfilled, then the funding agency becomes ready to discuss what you require, why you require, and what is going to be the deliverable at the end of the day. So in the Sathi proposal that we are likely to get under a consortium, which is a case study I am explaining, there were three verticals. One was the large scale static and dynamic cycling testing facility for resistant infrastructure creation, and this has been accepted. Next is category B, advanced analytical facilities for materials characterization and testing. These are the facilities we requested, and the funding agency has agreed after detailed discussion. Avikash.
अभी ठीक 5:30 ठीक yes and then category C comes where cryogenic low temperature measurement facility, product quality test and measurement facility, high purity gases like argon, nitrogen, oxygen, and printed circuit board design and fabrication facility and testing facility was agreed upon. And this is how a state-of-the-art research facility at Patna with a consortium of 5 institutions is likely to create very in near future within next 6 months. And I hope sincerely that Magadh University will also come forward as an end user of these facilities coming in 1 year down the line. Then comes overall objective we have to explain. So the objective was explained. The prime objective has to be very clear, and what we had placed for DST, the facility were demanded for creating infrastructure facility for analytical equipment, test and evaluation, fabrication, and manufacturing unit creation to catalyze an ecosystem of collaboration. Hello. And holding Hello. with any institution in the region. Can you hear me, sir? Yes. Sorry for the interruption, sir. We request you to conclude in 5 minutes. Thank you. Yes. Please tell. Sir, please conclude in 5 minutes, sir. We are having shortage of time. This is the last slide. Okay, sir. Thank you. Yeah. Then next item should be, as I had mentioned in the beginning, human capacity building to cater the need of technological challenges and creating talent pool to support startups and manufacturing, emerge as a self-sustainable unit with research infrastructure, and also for operation and maintenance, revenue generation has to be done using these infrastructure through MSME and startups, and lead in this region of state of Bihar for building research ecosystem and to nurture NSME and startups. The theme was cater to the materials characterization requirement of researchers, focusing on energy efficient and earthquake resilient buildings, low cost housing, clean and green energy solutions, new innovative and energy efficient processes, and materials for next generation of sustainable technologies. And the justification was to mitigate the regional imbalance in R&D facility and resource distribution with an aim to equal opportunity for all. This was the justification. Then the fund requirement is to be done in detail, where negotiation is very hard negotiation is to be done. And then we have to summarize. Why do we need any proposal? So this is how this case study has been elaborated to give an overview of what are the points to be noted while sitting to write a project proposal. Thanks a lot for your patient hearing. Thank you, sir, for an interesting lecture. We are now set to begin our interactive session. If anybody from the audience has any query, you can ask questions from sir. अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं. Any queries from the house? Since there are no queries, so that brings us to the end of this technical session.
On behalf of the organizing committee of this workshop, I thank you, sir, for taking some time from your busy schedule to be with us today. Your lecture was really interesting and it invigorated us a lot, highlighting the different aspects of funding as far as research is concerned. I also thank all the participants for the patience and support, and I also thank the reporters for this session for being with us. Thank you again. We welcome you, sir, one of the speakers of the fifth session, Professor Digvijay Singh is here with us. We extend our heartiest welcome to you, sir. Professor Digvijay Singh is an assistant professor in Department of Law and Governance, Central University of South Bihar, Gaya. We welcome you, sir. So now we will move towards our fourth technical session, and the speaker of this session will be joining us soon online. Has he joined? He has joined or not? Yes. Dharmendra Yadav, yes, they joined. Please join. Join. Okay. Abbas? Dharmendra sir, can you hear me? Our next speaker for this session is Dr. Dharmendra Kumar Yadav. Yes, I can. Okay, sir, you can hear me, sir. Sir, on the behalf of the organizing committee of workshop, I extend my heartiest welcome to you, sir. Before moving ahead, we'll have a brief introduction of Dr. Dharmendra. Dr. Dharmendra Kumar is presently working as Assistant Professor in Department of Statistics and Demography, National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. He is a Fellow of Royal Statistical Society, FRSS, London, UK, and elected member of International Statistical Institute, that is ISI, Netherlands. His fields of specialization are artificial intelligence, machine learning, health informatics, digital health, and sampling theory. Sir, we are very fortunate to have you to joining us that you joined us today here with our workshop. Sir, you will have 20 minutes for your lecture, sir. Try to conclude in brief, and after that we'll have 5 minutes of interaction with the students, the questions and the suggestion session. Over to you, sir. Thank you so much, and I convey my thanks to the organizers for inviting me for this and giving me this opportunity to interact with the researchers and faculty members, research scholars from different disciplines. So I'm thankful to the organizers, especially Dr. Shailen Singh, for inviting me and giving me this opportunity. So I will deliver a talk on what are the research funding opportunities which are available for the researchers from different disciplines. So I will cover both the government, funders, as well as government funding agencies, as well as this international private funding agencies. So let me share my screen. So visible. So my screen visible or not? Please let me know. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Yeah, your screen is visible now. You can continue. Okay, that's good. So I'm working as a professor in National Institute
Welfare. It is the autonomous institute under the Health Ministry, Government of India. So we are the apex institute for the teaching, training, and research in the field of public health. So in this particular session, we will cover what are the different research funding opportunities which are available in our country for the researchers. So the first question is why this research funding is required. So as we know that for conducting any type of research, we need certain resources. So these resources may be the infrastructure in terms of lab, in terms of chemical components, physical components. Okay, so for that we need funding or funds. So in the other way, for some research studies require the data collection from the field. So for that we have to travel and human resource we have to hire. So for that we need the funds. Similarly, conducting all the research, we have to disseminate that particular research, what the research work, what the research study you have done, we have to disseminate it. So what are the different way of dissemination? These way are the to present the paper, to publish the paper, okay, to disseminate, to organize or dissemination workshop. For that, we need some type of research funds. So now these are the basic requirements for the research funding. Now we come to the what are the different funding agencies, government funding agencies, which will provide different research fund for conducting research in the country, right? So on the basis of different domains, there are certain agencies which will provide the funds. So for the health, any problem? So for the medical research, the apex body for the funding of medical research is ICMR, Indian Council of Medical Research, which is a technical body, or you can say that apex body, which comes under the Ministry of Health and Family Welfare, which provide the basic research in the field of health research, right? So then Department of Health Research, DHR, it also comes under the Health Ministry. Then ICR, Indian Council of Agriculture Research, it provides the research funds for the different research projects associated with the agriculture domain. Then Department of Science and Technology, DST, Department of Biotechnology, DBT, Indian Council of Social Science Research, ICSSR, it provides the funds to the research projects to conduct the research in the social science domain. Then UGC, University Grant Commission, they also invite various minor and major research projects. MOE, Ministry of Education, Niti Aayog, as you know that this is a think tank of the ministry, government of India. Earlier it was Planning Commission. So the Niti Aayog also provide the funds under this Atal Innovation Center. Okay, so in our institute, in your university, you can develop any Atal Innovation Center. So for these, under these schemes, different fundings are available. Similarly, there are different international agencies which also provides the funding for the research, like WHO, World Health Organization, UNICEF, United Nations Development Program, UNDP, Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF, USAID. So these all are the international agencies, okay, which have the development fund or development, global funds, which can provide to conduct any research, especially for the socio-demographic and health domain in your country. So you can take the funds from these agencies. Right. So first we go to the ICMR. There are ICMR provides the Indian Council of Medical Research is a nodal agency in the country to promote health research in the country. It serves funding in the areas of discovery research. Suppose you want to discover new invention, then you have to conduct the discovery research. For that, we need
funding. Development research, you want to develop something, you want to develop some new particular medicine, new vaccine or anything, new methodology. So for that, ICMR will fund you. Descriptive research means some survey-based research. For that, you need to collect the data, and on the basis of that data, you make some inference. So for that, ICMR will also provide you the fund, research fund. So let's see the website of ICMR. There are different areas of health research. So ICMR will provide you the funds for the research in the communicable diseases as well as non-communicable diseases, reproductive, maternal and child health, nutrition related. You can make the proposal under these categories, thematic areas, and ICMR will provide you the fund, right? Then the other important, research, health research agency under the Health Ministry is Department of Health Research, DHR. So it provides grant in aid scheme for intersectoral convergence and coordination for the promotion and guidance on the health research. Okay, so it will provide you the fund to those projects which have the intersectoral convergence. These are the interdisciplinary research in the health. So for that, DHR will provide you the fund. Similarly, for development of labs or infrastructure health for the health facilities, this DHR will provide you the fund. So both ICMR and DHR comes under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Then under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the apex body for the research is ICR, Indian Council of Agriculture Research. So this ICR is the apex body for the coordinating, guiding, and managing research and education in the agriculture in the country, right? So for the agriculture research, ICR provide the research funding. So it provides the grant in aid for the extramural research in the agriculture. If you want to conduct any agriculture research related with some crop or some manure or different or the advancement in the agriculture production. So if you want to conduct any agriculture research, then ICR is the best body for the fund, right? And then another important component is DST, Department of Science and Technology, right? So any research in the basic sciences and technology, the DST is the apex body for funding. So these are research schemes. Just want to click and want to show how these, what are the different schemes which are available in the DST. These are the fellowship opportunities for the researchers. Right, so these are the extramural research funding, individual centering also. These may be the individual or you can institutional research is also provided by the DST. Like extramural research funding, the funding at high risk reward, empowerment and equity opportunities for excellence in science. The startup research grant, this is for the young scientists. So these are the fundings which are available. Okay. Early Career Research Award. So these are the professionals or academicians which are in the early stage of their career. Within 2 years, they can apply for these Early Career Research Award. It is necessary that you have to apply within 2 years of your career, right? And then there are J.C. Bose National Fellowship, Ramanujan Fellowship, NPF National Postdoctoral Fellowship. After PhD, you can apply for this one, NPD. Okay, serve postdoctoral overseas. If you want to pursue your postdoctorate from foreign, then you can apply for the DST serve scheme.
CSIR Young Scientist Award. So there are so many, fellowships, Indo-US fellowship for the women. So there are so, under the Department of Science and Technology. So the eligibility. So, my screen is visible. So, then is the different other body of this DST, that is Science and Engineering Research Fund. So it provides the funding for the science and engineering. Most of time, these are the engineering background. So for that, this SERP provides you the research fundings. Okay, and this SERP is not only with the major major research project, but they also provide you the fund for conducting different types of workshop. Okay, workshop, DP, and conferences. So they will provide the fund for those academic activities. Right. So I'm just clicking here. Is give me permission to share my screen. Can you hear me? Yes. Okay, so So there is a network issue at your end, I guess. I can see you. So could you please conclude in 2-3 minutes if possible? Okay, problem. Okay, problem. So I'm just concluding. So these are the science and engineering research. You can see the SERP. There are so many all proposals are there, which are closed, ongoing, upcoming. So they call for proposals are there in the Science and Engineering Research Board, SERP. Right? And the other funding agency is Department of Biotechnology. And the other important department is Department of Biotechnology, DBT, right? Which provides the result, funding opportunities. And so The main sir, could you hear me, sir? yes. Hello, can you hear me? Sir, we can hear you. Sir, we can hear you. Yes, yes. Am I So audible, these sir? are, yes, yes. So this is the Department of Biotechnology. So any research related to biotechnology, you can apply over here. Then for social science research, you can apply in the Indian Council of Social Science Research, New Delhi. Okay, so this ICSR provide the funding for major and minor research projects in the domain of social sciences. Okay, so basically they
invite the major and minor research projects. They can also, provide you the fund for conducting different types of faculty development programs. Okay, conferences for under this ICSR. So the other important component is Niti Aayog. So as you know that this is the planning commission and National Institution for Transforming India. So they will also provide you the research fund for the projects related with the health, nutrition, socio-demography, infrastructure, and there is a important Atal Innovation Mission. Atal Innovation Mission is a new initiative of the government of India under the Niti Aayog, in which any innovative ideas, if they can come, so this provide you the fund. Okay, it is just like a startup, innovative startup. So your university, your college can be the Atal Innovation Center. Okay, and you can collect the innovative ideas from your students, and for that you can have the fund from this Niti Aayog. So there is a Atal Innovation Mission. Similarly, there are different international agencies which also provide you the funds for conducting research in your country, like WHO, UNICEF, UNDP, BMGF, USAID. Okay, but your this research topic should be in general for the public health or anything which fulfill the requirement of these international agencies. Okay, it should not be individual, it should be a public health or general type of research. So these are some international funding agencies, right? So with this I conclude my presentation. Any inquiries from the participants, I will be more than happy to. Thank you so much, sir. We thank you for widening our horizon of knowledge about the funding agencies. Now the floor is open for the queries and questions. Is there any queries or questions, suggestions, anything you would like to ask the sir? Sir, I think there is no queries, sir. So with this, we come to the end of the technical session 4. And we thank you, Dharmen sir, for joining us today. It was an enlightening lecture by you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Due to paucity of time, we are skipping the 5-minute tea break as tea has already been served in the hall. We'll now start with the final technical session for the day. So, speaker for the 5th technical session is Dr. Singh, Dr. Digvijay Singh. And I request our speaker, Dr. Digvijay Singh, to the dais and grace the occasion, sir. So please. I would also request the session will be chaired by our Dilip Kumar Kesri sir, Professor and Head PG Department of Zoology, Magadh University, Bodh. I also invite him to the dais. So please. On the behalf of the organizing committee of the workshop, I welcome our speaker, our chairperson for the session. Before we proceed further, I will request Abha ma'am, Department of Zoology, to felicitate our speaker and chairperson with mementos and khada. Ma'am, please.
Dr. Singh is Assistant Professor in Department of Law and Governance, Central University of South Bihar, Gaya. He has done his LLB, LLM, and PhD from Banaras Hindu University. He was awarded doctoral fellowship from Indian Council of Social Science Research, New Delhi, to undertake his doctoral research on intellectual property rights of farmers. His areas of specialization or interest include teaching of intellectual property rights and legal theory and research in intellectual property rights. Besides number of published research papers to his credit, he is also the author of the book Farmers' Intellectual Property Right, published in the year 2018. We welcome you, sir, for this lecture. Thank you, sir. Now I request again our ma'am to felicitate and welcome our chairperson for the session, Professor Dilip Kumar Kesri, sir, Professor and Head, Department of Geology, Magadh University, Bodh Gaya, with mementos and khada. Ma'am, please. Please give a big round of applause for our guest and the chairperson. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, without wasting time, I request our speaker for the day for this technical session, Dr. Digvijay Singh, to take over the mic and he can start his lecture. Sir, due to paucity of time, I request you to complete your lecture within 20 minutes, sir. Please. Good afternoon to everybody, respected chair of the system and faculty members and participants. I'm from Central South Bihar, and we are right now going through the second cycle of NAC. I was busy in that meeting, but Dr. Salendra me to please join with us and share your some understanding on IP, and that's why I tried to come on time, but I was late. He asked me to be here by 3 p.m. and but I came here at 4 p.m. Sorry for this inconvenience. My area of study, research, and interest is intellectual property rights. And I just wanted to share, as I was communicated that faculty members are from science background, and they are supposed to have some basic knowledge about the patent, and that's why I choose this topic to discuss with you. That is patent procedure and grant in it. In the background, just try to understand that the major aspect of industrialization which we have discussed in our curriculum and all is the production of goods and services. But at the same time, in that same industrialization, there is something else which we need to discuss, and that is invention of machines. Industrialization could not be possible without invention of machines. And if there is invention of machine, the inventor should be given protection over that machine, and there must not be unauthorized use of that machine. And that's why the protection of patent law is relevant. Patent law is basically a form of intellectual property, and in brief, intellectual property is any property which is outcome of our intellect. Property which nature has not given to us. The property which are created by human minds, intellect. Intellectual property, it is classified broadly in two parts. One is called copyright, that is very much relevant for all of us. And the second one is called as industrial property. And out of that second branch, industrial property, one is patent. And I would be focusing on patent only. Besides patent, there are trademarks, geographical indications, designs, topography, etc. I would be focusing on patent. Next slide, please. What do you mean by patent? Patent is exclusive right given by state to the inventor
for disclosing his invention. To get protection of patent, registration is must, and for that registration, submission of your invention is to the state is must. When we invent something, we have to disclose that invention to the state, then only state gives us protection, and that is called as limited monopoly for 20 years. The inventor shall be authorized to manufacture, to sell, to use his invention for next 20 years without any limitation, without any restriction on the part of state, except a few exceptions are there. And that issue was very relevant during the pandemic. What happened initially when a few vaccines were invented? If there is a protection of patent law over those vaccines, definitely those vaccines will not be freely available to the public. Only those companies which are having patent right will be manufacturing, will be selling that vaccine at a high price. Keeping in mind this scenario, in October 2020, India and South Africa, they jointly submitted a proposal to the WTO, World Trade Organization, to waive off the provision of patent protection during the continuance of this pandemic, so that the vaccines may be manufactured by many companies, pharmaceutical companies, and vaccines may be available in each and every corner of the world. That is the relevance of patent law. And at that time, it was estimated that in India only, there were at least 250 pharmaceutical companies which were having resources, which were having infrastructure to manufacture that vaccine. They were only waiting for the license, the permission on the part of companies, the pharmaceutical companies who were having patent protection over that. Otherwise, there may be infringement of patent and they may be liable to penalty, compensation, and all. And that's why patent is relevant for us. Patent protection is directly related to the economic development of a country. As much as creations are there, inventions are there, the peace and prosperity and every kind of development related to that will be there in society. We can't assume the fulfillment of our basic needs without inventions. If there is a scarcity of food, we must invent in that. We must invent seeds which are drought resistant, which are flood resistant, which are able to generate high yields of productivity. And that's why research and this invention in every field is required. And that patent is a little bit relevant for all of us, that when we are going through the NAC assessment, particularly key indicator 3.4.3 is talking about the patent, and there is a 10 marks will be given by NAC to the institution based on the patents granted to the faculty member, to the staff, to the college, to the university. And to my knowledge, that is secret. To my knowledge, in the assessment cycle, the period of 5 years, there must be at least 7 patents granted to get maximum marks, 10 marks. That is relevant. That is relevant for all of us individually, because for the appointment as assistant professor in the universities and all, besides publication of paper, publication of chapter, publication of your books, besides MOOCs, grant of patent is also one criteria. It strengthens your CV and definitely you will get better chance. And that's why this patent is essential. It is must. It is sine qua non for the society, for the institution, for the people. And when we are talking about patent law, next slide please. I just wanted to share some data with all people. Right now, at a global level, China is heading. In the year 2022, approximately 30 lakh patent applications were filed, and out of 30 lakh applications, 15 lakh applications were filed in China only. India is at the 6th position, and the filing rate in India right now is only 60,000 around. China में 15 लाख एप्लीकेशन फाइल हो रहा है पेटेंट ग्रांट करने के लिए, और इंडिया में केवल 60,000. हम कभी compete नहीं कर सकते उनसे. Actually, until recently, US was at the top, and there was a monopoly.
with respect to grant of patent and filing. There was a monopoly of United States, but since last 3 years, China is heading, and most of the patent applications are being filed in China. Most of the patents globally are granted in China, and we are at the 6th position. But in few years, 6 years, some improvements are there in India, and that is examined on the basis of global innovation ranking. In the year 2018, the ranking of India was 82, and gradually it improved, and in the year 2022, the ranking is 42. They're also improving. India is also improving in the field of inventions, in the field of filing patent, grant of patent law, but we are very much behind with this China, US, and Japan and all countries. The inventions are there, but the question is that how far people are aware about that patent right, whether they approach to the patent office to get protection or not. That is the question. And the philosophy is that patent protection is based on the first and fact that is called as disclosure requirement. You have to disclose your invention to the government first, and only you shall be granted patent. There may be a doubt in the mind why this disclosure requirement is there. Because each and every research is a raw material for the next research. If you don't disclose your research, there will be no further improvement in that area. To ensure that development in the field of research and all, the requirement is that globally, that is the requirement is that patent shall be granted if you disclose your evidence. And globally, except United States of America, this principle is being followed. You have to disclose your evidence to the government. Exactly. I'm coming to the Indian statistic. That is, in 2022, total 72,000 applications were filed, and around 31,000 patents were granted. Next slide. I just wanted to highlight the statistic of this state. In the state of Bihar, yes, definitely we know that there are less and less industries and academic institutions and all, but the situation is very poor. In 2022, there is a list of top 25 states filing patent application, and state of Bihar is not there in 25 states. And less than 50 applications are filed. People who are in this state, industries who are established in this state, those who are inventing something, those who are filing for patent application, it is only 50 per year. Just try to understand the situation. Next slide, please. Yes. I just wanted to let you know the procedure. What is the procedure for grant of patent? I told you that the grant of patent is based on filing of application, that is called as first to file principle. You have to file your application first, and thereafter patent shall be granted. In that context, the first step is you have to file application. We don't know where to file application. We don't know whether our invention is eligible to get protection of patent or not. We don't know whether, as a policy matter, government prohibits to get protection to give protection over our invention or not. And that is the biggest problem: the lack of awareness among the academicians, among the people who are inventing something. When you invent something, as an inventor, the natural person, machines can never be invented. Yes, we are talking about artificial intelligence. ChatGPT is there in the market. Much discussion is going on over ChatGPT. Remember one thing: ChatGPT has been invented by some natural person and not by itself, by own. Some natural person has. When you invent something as a natural person, you may file application, or you may assign your right to somebody else to file your application, or in case of your death during the invention, during the research, your representative may file application. And the second one is relevant for all of us. When we are inventing something in a collaborative research,
with the support of any institution, which the previous speaker was talking that we may receive fund from different institutions for doing research. Definitely, the result of each and every research is that something inventive. You may file application for patent protection over that. And in that situation, remember one thing: when you invent something in a collaborative work, collaborative research, you are inventing not independently, rather in collaboration with institution. If you are a faculty of Magadh University and inventing something, and the support has been provided by the Magadh University, in that situation, Magadh University will file application for grant of patent, and you have to mandatorily assign that right to the Magadh University. You shall be considered as the applicant, sorry, inventor, but the applicant will be the Magadh University. Magadh University will file that patent application. Patent application shall be granted in the name of Magadh University, but the name of inventor shall be there. Now there arises a very typical question. The question is, if I invent something with the collaboration of Magadh University, and university applies for grant of patent, and suppose that patent has been granted. An invention is useful. That invention is useful, it is used in industry. University has decided to license that invention to an industry, and that invention is being produced in industry, and there is a huge profit to the university. The question arises, out of that profit, whether a particular share should be given to the inventor or not, the faculty member, the staff, the researcher. And for this particular purpose, the requirement is that each and every university must have their IPR policy, intellectual property. In past 3-4 years, almost all universities, IIMs, IITs, they have drafted their IPR policy to decide this question. Because in almost all academic institutions, researches are going on in collaborative manner. Because as a researcher, as an individual, I don't have that facility. University is having that facility, but university is not having the natural person. And that's why there is a requirement of collaboration, and to decide the dispute between these two people, IPR policy is must. If I give example of IIT Kharagpur, IIT Kharagpur says that if any invention is there with the collaborative research between institution and the faculty, and if that invention is being commercialized, and there is a profit, out of that profit, 50% amount shall be shared with that faculty. Just try to understand how encouraging that factor is. And protection of IP is based on that philosophy. As much as encouragement is there on the part of state, on the part of institution, there will be more and more inventions. To ensure there are inventions, institution must try to encourage people fast, and that sharing of benefit with the inventor is a kind of that encourage. In case of invention, I just let you know the requirement. If you invent something, the requirement is that that invention must be new. If it is not new, patent shall not be granted. And the novelty of invention shall be examined in the context of available stock of knowledge globally. पूरी दुनिया का जो knowledge है उसमें आपका invention नया होना चाहिए. Not only India, globally. And one technical point is that suppose that you are inventing something, and before filing patent application, you wrote a research paper, you published that research paper. On the basis of your research paper itself, the novelty of your invention shall be indicated. अगर आपने पेपर 6 महीने पहले पब्लिश कर लिया, 6 महीने बाद पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, तब कहा जाएगा कि आपके इन्वेंशन के बारे में सूचना ऑलरेडी 6 महीने पहले से दुनिया को अवेलेबल है, आपका इन्वेंशन नया नहीं. So all faculty members who are doing research in the field of science and all, they must be aware of that. एक बार आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल, if there is a possibility that the result of your invention, the result of your research is something called invention, and that is able to be given protection of patent law, in that situation, you must keep your research secret, file patent application first, thereafter publish your paper. Otherwise,
It may be a potential invention, but may not be given patent rights. That is one requirement. Besides novelty, another requirement is that is called as non-obviousness. If you claim that you are inventing something, that invention must be something new to the world. It must have inventive step. Inventive step is that feature of any technology that is known to the researcher only and nobody else. And nobody else. अगर किसी और को पता होगा तो फिर आपके इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा. इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा तो फिर आपके इन्वेंशन को पेटेंट का प्रोटेक्शन नहीं. And the third requirement is that your invention must be industrially applicable. It means it must be able to be produced in industry. It must be able to be used in industry. For example, if I invent this particular pen, definitely the pen has been manufactured in industry, and that is also used in an industry called education. The requirement is fulfilled. तो अगर कोई भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं तो या तो वो इंडस्ट्री में बनाया जा सके या इंडस्ट्री में यूज हुआ हो सकेगा, तभी आपको पेटेंट का प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज पेटेंट का प्रोटेक्शन. The fourth requirement is that the subject matter. There is a difference between invention and discovery. Discovery simply means that is part of nature and somebody has discovered only. Invention means it is a part of nature and has been invented first time. Means if I discover a medicinal plant in Himalayan region, I shall not be given patent protection because that medicinal plant is already part of nature. I am not inventing, I am discovering. But suppose that going a step forward, by going through my research, that is called as reverse engineering, I am able to understand what is the trait in that medicinal plant which is useful for a particular thing. For example, in case of turmeric, you know that turmeric is used for the purpose of healing wounds. It is used for the purpose of boosting our immunity and all. The turmeric as such may be considered as having medicinal properties, but turmeric as such is not patentable. But suppose that I do research, going through the rigorous process, I am able to understand what is the trait in that turmeric which is useful, which is having useful property for the purpose of this, and further I invent that property in the laboratory, then I invent something and I shall be given protection of it. You will be surprised to know that in the year 1996, in US, patent was granted over turmeric. United States में turmeric पर, नीम पर और बासमती चावल पर पेटेंट ग्रांट करता है. उनका लॉ भी यही कहता है कि when patent shall be granted, that subject matter should be new. बाद में इंडिया ने अपोज किया और इंडिया ने जब अपोज किया तो बाद में उनको अपना पेटेंट रिवोक करना पड़ा, and that is now freely available to all us. Suppose that there is a patent granted to any multinational company over turmeric, we can't use turmeric without its permission. उसी ब्रांड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो पूरा. Understand? Surprising. I'm not going into the religious controversy. There's one thing with having contentious issue, that is Gomurtra. I don't know what is there is any healing property or not, whether it is useful or not. I don't know. I don't have any experience. But recently, 4 months back, Gomurtra has been granted patent in the United States of America. And we know that patent is always granted on invention. The invention must have inventive step. And if patent has been granted over Gomurtra in the United States of America, I'm sure that there is some science. It's not only a matter of religion, there is some science. And the next step of government of India would be that to oppose that and to prove that there is a religious use of that Gomurtra and the texts are available, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट उसको रिवोक कराना पड़ेगा, अदरवाइज इस पे भी मोनोपोली हो जाएगा किसी कंपनी का और हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे if it is having any medicinal property. That is the important sir. The next step is examination of the application. When you file patent application,
your patent application will be examined. And if your application, your invention satisfies the requirement of patentability, then only patent shall be granted. There are patent examiners appointed by the University Union Public Service Commission. They examine your invention. They will examine whether your invention is new or not, whether there is inventive step or not, whether it is industry applicable or not, and the subject matter is invention or discovery. After examination, they will communicate to you whether your invention is a subject matter for grant of patent. Okay. And then after patent shall be. In that examination, one technical point is that in that examination, your invention will be examined, and when you file patent application, you have to submit, that is called as specification. That is called as disclosure. When you invent something, what is that invention and how that invention will work? You have to submit that document to us, and that is the document which we prefer to say that techno-legal document. That document may only be drafted by the people who know that technology, who know that law. And that's why the requirement of patent examiner is that they must have the degree of bachelor degree in science as well as the law. Specification means when you submit your application, it will be examined what is your invention and how it will work. Remember one thing. If you disclose your invention in a very detailed manner, after submission of your application to patent office, the application will be published and your application will become a public document. Anybody can go through your application, can understand your invention, can understand how that invention will work, and can use your invention before grant of patent. And that's why the requirement is that the patent must be granted in such a way that, the specification must be drafted in such a way that it must be, examiner must be able to understand, but no common man will be able to understand. The examiner are more samajha because they are professional. They will be competent for that. लेकिन अगर आम आदमी समझ जाएगा तो फिर आपको पेटेंट ग्रांट होने से पहले वो मार्केट में बड़ा यूज करने लगेगा, फिर आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है. इसलिए स्पेसिफिकेशन को ड्राफ्ट करना ही सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट. When we try to file patent application by own, the biggest problem is to draft that specification. Otherwise, right now, all the process of application filing will be conducted online, and even in case of online filing, there is a rebate in fee by 10%. अगर आप ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो 10% फी कम लगेगा, अगर ऑफलाइन फाइल करेंगे तो ज्यादा लगेगा. गवर्नमेंट भी ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए इनकरेज कर रहा है. आप सिंपली आईपी इंडिया के वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना अकाउंट बना करके सब कुछ प्रोसेस से जा सकते हैं और आप खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. बट चैलेंज फॉर यू इज दैट टू ड्राफ्ट स्पेसिफिक, बिकॉज if patent examiner consider that your specification is not sufficient, patent shall not be granted. And if your specification is in such a manner that common man is able to understand, before grant of patent, your product will be available in the market and you can't do anything. आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो उसको हो जाएगा. इसलिए ड्राफ्टिंग हमारे लिए एक चैलेंज. जो पेटेंट एग्जामिनर्स हैं, ये आपके एप्लीकेशंस को एग्जामिन करेंगे. जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया एग्जामिन करने का एक रिक्वायरमेंट और है. एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, the government of India, under its Patents Act 1970, provides that these are the list of inventions which are not patentable. And there is a long list of 17 categories of inventions which are not patentable. And it is a matter of public policy. And one such example is that when you invent something in the field of atomic energy, patent shall not be granted. Because if patent shall be granted to you, a monopoly will be granted to you, you will be the exclusive user of that atomic energy, you will start using atomic bombs, selling and all, and there will be question of
national security. And that's why government says that no patent shall be granted in case of atomic energy. Actually, as per the Atomic Energy Act 1962, when you invent something in the field of atomic energy, it is simply acquired by the state. Government उसको acquire कर लेगा, acknowledge करेगा कि आपने invent किया है, लेकिन आपको कोई authority नहीं रहेगा उसको बनाने का, use करने का, क्योंकि it is directly connected with concern with the issue of national security. अगर कोई बम बना करके atomic बम पाकिस्तान को दे देगा तो क्या होगा, for example. तो इसलिए उस पे restriction लगाया है. तो सारे invention, for example, if you invent any method of agriculture, that same method is not subject to patentable, it is not able to get patent protection. Any farmer can use that. Anybody can use that method of agriculture. If you invent a solution to any mathematical problem, आपने पाइथागोरस का जो थियरी उसको आपने प्रूफ कर दिया और कुछ दूसरा थियरी आपने प्रूफ कर दिया, कोई दूसरा मेथड से, तो उस पे भी आपको पेटेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी उस थियरी को यूज कर सकता. There are long list of 17 categories of inventions. If you invent something that is based on terrestrial period, I invent a medicine, a medical formula, and that is based on turmeric. There is a use of biological material, turmeric, natural resources. In that situation, the law prohibits that no, you shall not be granted. You shall not, but the point is that if there is further advancement, then in that situation you shall be granted patent. In case of examination, if examination is in your favor, the patent office will proceed for the next step, and in the next step, next slide please. Next slide. Yes. Once your application is examined and it is found suitable for the grant of patent, it fulfills all the requirements of patentability, it is not there in the list of ineligible inventions. In that situation, your application will be published. Patent. अभी आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ, आपका एप्लीकेशन पब्लिश किया जाएगा पेटेंट जाएगा. पब्लिश करने का पर्पस क्या है आप समझिए. मैंने आपको बताया your invention must be new in the light of available stock of knowledge in the world. अब आपको लगता है एक पेटेंट एग्जामिनर की इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया के स्टॉक ऑफ नॉलेज के कंपैरिजन में ये बता पाए कि आपका इन्वेंशन नया है या पुराना? Not possible. Not possible. And in that situation, what happens? If examination is in favor, your application will be published and public will be invited for any objection. Suppose that examiner doesn't know that your invention is not new, but I know that your invention is not new. As a public, I may oppose the grant of patent, and that's why your application is published. That application and all the process is time bound. कितने समय में आप एप्लीकेशन फाइल होने के बाद कितने समय में आपका एग्जामिनेशन होगा, कितने समय में पब्लिश होगा, ये सारा कुछ टाइम बाउंड है. And in case of publication, the mandatory requirement is that after publication of your application for next 6 months, no patent shall be granted. Means technically there is a time of 6 months for the common man to oppose the grant of patent. Why public will oppose? Public इसलिए oppose करेगा, public को पता है कि once the monopoly is granted in favor of inventor, in favor of applicant, then our use of that invention will be unauthorized use and we will be liable to the penalties and all. And that's why we oppose the grant of patent. To invite that opposition, patent office gives a period of 6 months, time of 6 months to oppose that grant. आपका एप्लीकेशन 6 महीने तक पेंडिंग रहेगा. पब्लिश होने के बाद इनवाइट किया जाएगा, वेट किया जाएगा कि कोई अपोजिशन आए. इफ नो अपोजिशन इज रिसीव्ड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. If no application no opposition is received, then in that situation, patent shall be granted
and will be published. Next slide. Yes. अगर अपोजिशन रिसीव हुआ तो प्री ग्रांट अपोजिशन होगा, अपोजिशन की सुनवाई होगी, सुनवाई करने के बाद कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिसाइड करेगा कि पेटेंट ग्रांट किया जाए कि नहीं किया जाए। इफ द decision of controller of patent is in your favor, patent shall be granted. If decision of controller of patent is not in your favor, no patent shall be granted. That is called as pre-grant opposition. Your application will be opposed before grant. That's why we call it pre-grant opposition. And there are many grounds. One surprising fact is that when any invention is invented, let's just try to understand when that invention will be beneficial to the society. When when that invention will be published and इंडिया में एक फैक्ट मैं उसको बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, सरप्राइजिंग फैक्ट। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक रिक्वायरमेंट है, उनका कंसेप्ट है यूटिलिटी पेटेंट। इफ यू इन्वेंट समथिंग, they will examine whether that invention is useful for the society or not. Based on that utility of invention, patents shall be granted. In India, we don't follow the utility model of patent, we simply follow the patent. And the surprising fact is that out of total grant of patent, approximately 81% patents in India are of no use. They are only an invention on paper, have been granted patent in name of some inventor institution, and there is no commercialization. And right now, there is much focus on the collaboration between academia and industry. Academia is considered as the basic platform for nurturing the ideas, and the industry has to commercialize that idea. And there is a huge lag. We are not having such culture. There is no collaboration between academic institution and industry, and that part is lacking. And another part is lacking that our inventions are not very much useful. 81% inventions are of no use. They are only on paper. And another more surprising fact is that out of remaining 19% inventions, actually only 5% inventions are contributing to the economy of this country. आप समझिए कि कितनी आवश्यकता है इन्वेंशन करने की। अगर गवर्नमेंट का विजन है हमको $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए इन्वेंशन, और गवर्नमेंट ने फोकस भी किया हुआ है। आप देखते होंगे कि सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनाया है। उस काउंसिल का पर्पस यही है कि आईपीआर के बारे में अवेयरनेस करना, आइडियाज को रिवर्स करने का एक प्लेटफॉर्म देना और प्रोटेक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा स्लाइड तो बहुत लंबा था, टॉपिक बहुत लेंदी था, लेकिन सर ने कंक्लूड करने के लिए कहा तो मैं यही कंक्लूड करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज ये स्लाइड में यहाँ पर एक कॉपी आप सबसे कर लीजिएगा, अगर किसी की जरूरत होगी तो आप सर वो अवेलेबल रहेगा। एक्चुअली उसमें भी आईपीआर है कॉपीराइट, बट ये आईपीआर मगध यूनिवर्सिटी का है, मेरा नहीं है। But because I prepared that PPT for the presentation in this hall, and the moment I presented that PPT, I don't have copyright. आप उस पे copyright मगध यूनिवर्सिटी का होगा, मगध यूनिवर्सिटी उसको यूज कर सकते, आप यूज कर सकते हैं। Thank you. Thank you very much, Dr. Digvijay Singh जी। Very nice lecture and presentation। और मैं समझता हूँ कि साइंस के सारे फैकल्टीज के लिए, खासकर यंगर जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। पूरा डाटा इन्होंने दिया, और खासकर ये बड़ी देख के निराशा हुई, इस स्टैटिस्टिकल डाटा में बिहार बहुत पीछे है। इसलिए आज के इस वर्कशॉप से मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को ये ललक जागेगी कि हम भी इस दौड़ में आना है और अपना
अपने साथ अपने विभाग और मगध यूनिवर्सिटी का नाम इसमें अंकित कराया। अगेन थैंक यू डॉक्टर जी। और फिर पूरे आज के इस पूरे सेशन के सभी आयोजनकर्ता और किसी न किसी रूप में जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Thank you, sir. Now, since there was no queries, no questions, so we come to the end of the session for today. And now I would like to invite Dr. Meenakshi from PG Department of Geography for the formal vote of thanks. Please. Thank you, Dr. Chandni. As we come to the end of this fruitful day, I extend my heartfelt gratitude to our eminent speakers, Dr. Arun Kumar, Professor Ashok Kumar Ghosh, Professor A. Thakur, Dr. Dharmendra Kumar Radha, and Dr. Digvijay Singh, who took some time out from their busy schedules to be with us today. I thank Professor Rehmat Jha and Professor Dilip Kumar Kesri for chairing the technical sessions. I thank our reporters of the technical session, Dr. Atul Kumar Srivastava, Dr. Kumar Vishal, and Dr. Ravi Kumar Singh for their support. I also thank our friends from the media for providing us with ample coverage for today's function. A big thanks to all the participants, without whose presence the technical sessions would not have been successful and interesting. Last but not the least, I thank my colleagues and the non-teaching staff of Magadh University who have been working tirelessly behind the scenes to make this workshop a success. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Meenakshi. Now, I would request everybody to please stand up for the national. Request the female teachers to come forward. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Thank you all for your patience.